Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So myself, Anil Adhikari, PGT Mathematics from DPS Lamachor, and in this session I will discuss about the remaining questions of limits. Okay, in my previous video I have discussed what is limit, what are the methods of finding limits, and what is algebra of limits. Okay, and I have also solved some questions from NCERT. So today I will solve the remaining questions of exercise 13.1 and will try to finish it. So let's start the video. So I will start from question number 20. Okay. So question number 20 is given as limit x tends to 0, x is tending to 0, sin ax plus bx upon ax plus sin bx. Okay, so this is our question. What we have to do here, when x is tending towards 0 and x is approaching towards 0, then where will our function will turn? हमारी function की value क्या होगी उस time पे? Okay, so since we know that there is a formula that limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to 1. This is the trigonometric function, trigonometric ratio, है ना, sin theta. So this is a formula. Limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to 1. So we will try to make this function like in this manner. We will reduce it and then we will apply this formula to solve the limiting value of the given function. So in numerator and denominator, take x common. So taking x common in numerator, we get sin ax upon x and here b, and in denominator taking x common, we get a plus sin bx upon x. X will be cancelled out. So what we get from here, limit x tends to 0, sin ax upon x. Since here you can see easily, so I will do it in next step, and in denominator a plus sin bx upon x. Now see student, there is a formula limit theta tends to 0, sin theta upon theta is 1. So your angle and denominator both should be same to apply this formula. Okay, so here you can see the angle is ax and in denominator is x. So for that, to make this x ax, we have to multiply and divide by a here, and similarly to make this one bx, we have to multiply as well as divide by this x by b. So next step is limit x tends to 0, sin ax upon x, multiply with a, and here divide and multiply by a in this term, plus b upon a plus sin bx upon bx into b. Okay, now by algebra of limit we can divide the limit in the given function. So here limit x tends to 0, sin ax upon ax, take it in one bracket, and the remaining part is a plus b upon a plus limit x tends to 0, sin bx upon bx into b. Now since we know that if x is tending towards 0, so where will be ax tending? A का multiply करेंगे दोनों ओर, multiply by both side. So ax will also tends to 0 and similarly bx will also tends to 0. So we can write it like limit ax tends to 0, sin ax upon ax, okay, multiply with a plus b upon a plus limit bx tends to 0, sin bx upon bx, okay, multiply with b. So on applying the formula, this will be 1. So 1 into a plus b upon a plus 1 into b, that is a plus b divided by a plus b, and on dividing this will be 1. Okay, so your answer for when x is tending towards 0, then the function, the limiting value of the function will be tending towards 1. Okay, next question, question number 21. Okay, question number 21, limit x is tending towards 0, cosec x minus cot x, cosec x minus cot x. So see student, if we will use here the direct method, then cosec x and cot x both will be approaches toward infinity. This will be in defined format. So we will factorize both the term. Okay.
ओके हम दोनों को क्या करेंगे फैक्टराइज का मतलब दोनों को हम क्या करेंगे कॉसेक को साइन में और कॉट को साइन और कॉस में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे देन वी विल सॉल्व इट. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x can be written as 1 upon sin x minus cot x can be represented as cos x upon sin x. Okay, now what we have to do, take the LCM. Okay, so this will be limit x tends to 0, sin x will be LCM and in numerator we got 1 minus cos x. Now see here again if we applying the limit, अगर हम दोबारा से लिमिट अप्लाई करें बेटा तो अगेन ये क्या हो जाएगा 1 minus 1 because cos 0 is 1, so numerator will be 0 and denominator will be 0, so this will turn in the format of 0 upon 0 which is undeterminate form. We have to reduce undeterminate form in terms of determinate form. So again we will use here the trigonometric formulas. So since we know that cos 2x is 1 minus 2 times sin square x, in trigonometric functions we have familiar with this formula. So what will be cos x? Cos x will be 1 minus twice sin square x by 2. See student, if the angle is 2x then after in the formula it will be x, half हो जा रहा है just. So अगर angle x है तो it will be x by 2. Similarly sin 2x, what is the formula for sin 2x in term of sin and cos? 2 sin x into cos x. But here the angle is x, so what is the formula for sin x? Sin x will be twice sin x by 2 into cos x by 2. Now putting this formula in here, so we get limit x tending towards 0 1 minus, what is the formula for cos x? 1 minus twice sin square x by 2 divided by, what is the formula for sin x? Twice sin x by 2 into cos x by 2. Okay, now limit x tending towards 0, 1 minus 1 will be 0, so in numerator we get twice sin square x by 2 and in denominator we get twice sin x by 2 into cos x by 2. Now 2 and 2 will be cancel out, this will be cancel out, we get limit x tends to 0 sin x by 2 upon cos x by 2, that is tan x by 2. Now you can apply the limit, so on applying limit we get tan 0 and tan 0 is equal to 0. 0 is a definite value, 0 is a real number, so your limiting value will be 0. This is the answer. Pause the video and take the screenshot. Okay, next questions. बड़ा टफ हो रहा है स्टूडेंट्स इसको मिटाना ना, अरे क्या प्रॉब्लम है बोर्ड में. कोई बात नहीं स्टूडेंट, जितना स्पेस है उसी में क्वेश्चंस कर लेते हैं. इस बोर्ड को मिटाना बहुत ही टफ हो रहा है मेरे लिए. सो हियर आई एम डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22? Limit x is tending towards pi by 2 tan 2x upon x minus pi by 2, tan 2x upon x minus pi by 2. Okay, so this is our next question number 22. Now see, if you are using direct method, okay, अगर हम direct method को use करें यहाँ पे, we just apply the limit, then what will we get here? 0 upon 0 फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. सो दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म. सो टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी हैव टू रिड्यूस दिस फंक्शन, ओके, सो दैट वी कैन गेट अ रियल नंबर, अ फाइनाइट वैल्यू. सो व्हाट कैन वी डू हियर? लेट x minus pi by 2 equal to some other variable t. We can suppose it that x minus pi by 2 is some other value t, so that the value of x is t plus pi by 2. Okay. Now see the limit, because this function is given in the form of variable x. Now we are changing this function in terms of variable t, so your limiting value will be also changes.
लिमिट भी चेंज होगी बेटा, बिकॉज वेरिएबल x से t में फंक्शन कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका लिमिट जो x के लिए था वो अब वेरिएबल t के लिए चेंज होगा। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए, व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2, x की जगह पे पाई बाय 2 रखेंगे यहाँ पे, तो t कहाँ को टेंस कर रहा है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 दैट इज 0। सो योर लिमिट विल बी चेंजेस एज t लिमिट t tends to 0 10 2 time, what is the value of x? Value of x is this, t plus pi by 2, t plus pi by 2 upon x minus pi by 2 is t, okay. So this will be limit t tends to 0, so 10 multiply 2, so this will be 2t plus 2 into pi by 2, that is pi upon t. So limit t tends to 0, we can write it like 10 pi plus 2t upon t. So limit t tends to 0. Now see, tan 180 plus theta, so 180 plus, where will be the angle? Angle कहाँ जाएगा? The angle goes to third quadrant, and in third quadrant tan is positive, and there is a 180 plus case, so this will be tan 180 plus theta, tan theta, so sin 2t upon t. Now multiply and divide by 2 and take 2 common from numerator, limit t tends to 0, tan 2t upon 2t, okay. Now see, if t is tending towards 0, so 2t is also tends to 0, so we can write it twice, limit 2t tends to 0, tan 2t upon 2t, and this is by formula will be 1, 2 here, so 2 into 1, that is 2 is the limiting value of this particular question. Pause the video and take the screenshot. Now next question, for next we have to rough it, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। Okay, next question. Now question number 22, find limit x tends to 0 fx. Question number 22, find limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx, limit x tends to 1 fx, okay. इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन हमें डिफाइंड है 2x plus 3 when x is less than equal to 0 and 3 times x plus 1 when x is greater than 0, okay. Now see dear student, here the function is given in this format, okay, and what we have to do here, we have to find out the limiting value of function when x is tending towards 0 and the limiting value of function when x is tending towards 1, okay. So we will discuss one by one, ठीक है. So first we will discuss at x is equal to 0, for x tends to 0, not at, first we will discuss for x tends to 0. So beta, as I told you earlier, when will limit exists, if left hand limit is equal to right hand limit at x tends to 0, then we can say that our limit is exists at that point, and whatever we have given, whatever the answer is given here, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो भी वैल्यू होगी वो उस लिमिटिंग वैल्यू, उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है. सो फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं. सो फाइंड फर्स्ट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट. सो व्हाट इज द फार्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स. व्हाट डज इट मीन, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम द लेफ्ट. 0 minus means x is tending towards 0 from the left, okay. Suppose let it be a point 0. For left we have to rush back towards the left hand side of 0, and to find the right hand limit we have to rush back towards the right hand side of the 0. So for left hand limit x will approach towards 0 from the left, and there will be x will approach from the
राइट टूवर्ड्स जीरो, तो लेफ्ट हैंड के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस, इट मीन्स दैट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो फ्रॉम द लेफ्ट। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स विल रिप्लेस विथ जीरो माइनस एच, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो, जीरो के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो बेटा जीरो से थोड़ा अमाउंट जीरो से हम क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा ना, जीरो के लेफ्ट में जाने के लिए 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा। तो 2 स्टेप पीछे आते ही आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, जीरो माइनस एच हो जाएगा ना, वेयर एच इज ए स्मॉल क्वांटिटी। एंड सिमिलरली टू गो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ जीरो, जीरो के राइट पे जाना है तो 2 स्टेप आपको राइट की ओर को जाना पड़ेगा, एक स्मॉल स्टेप राइट की ओर को जाना पड़ेगा। तो राइट की ओर को कितना जाएंगे फिर, जीरो प्लस एच, वेच एच इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। Okay, now see here, so this is limit s tends to 0, this is the process बेटा, हर एक स्टेप को आपने लर्न करना है, ठीक है ना। Now see, we are talking about the left hand limit at point x is equal to 0, so where is x less than 0, here you can see x is less than and equal to 0, x जब 0 से छोटा और 0 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x plus 3, so we will find the value of f of minus h from this particular function, ठीक है। वाई, बिकॉज दिस इज द फंक्शन व्हेन एक्स इज लेस देन 0, सो लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, तो एफ ऑफ माइनस एच कितना, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एच हियर, सो ट्वाइस माइनस एच प्लस 3, सो दिस विल बी लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 2h प्लस 3, ओके। नाउ आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे दिस विल बी माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, दैट इज 3 इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ टॉकिंग अबाउट राइट हैंड लिमिट, सो अगेन फर्स्ट स्टेप, लिमिट x विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम द राइट, सो सबस्क्रिप्ट पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम द राइट, राइट से आ रहा है तो प्लस का साइन, ओके। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, x will be replaced with 0 plus h. Why? Because we are interested to go towards the right hand side of 0. तो 0 के राइट हैंड साइड में जाने के लिए एक स्मॉल अमाउंट आपने क्या करना पड़ेगा, 0 में ऐड, मैंने कहा ना, सपोज दिस इज द पॉइंट 0, राइट में जाना है, दिस इज द पॉइंट 0, मेरे को 0 की तरह सपोज करिए, सो अगर मैंने कहाँ जाना है, राइट पे जाना है, तो 2 स्टेप मुझे इधर आना पड़ेगा ना राइट में जाने के लिए, ये 2 स्टेप डिस्टेंस h है, ओके। नेक्स्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h, now see here, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम 0 के, सो व्हेन विल x ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 टाइम x प्लस 1, सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f of h फ्रॉम दिस गिवन फंक्शन, ओके, बिकॉज देयर x इज ग्रेटर देन 0, सो लिमिट h विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0, सो f of h फ्रॉम हियर 3 टाइम h प्लस 1, नाउ अप्लाइंग लिमिट वी गेट 3 टाइम 0 प्लस 1, दैट इज 3, since left hand limit equal to right hand limit and the value is 3, so the value of limit x tends to 0 fx is equal to 3, okay, so you can say limit x tends to 0 f of x is equal to 3, okay, this is your first answer. And second, limit x tends to 1 f of x, limit x tends to 1 f of x, now see द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की जो डेफिनेशन यहाँ दी है वो किस केस में, सी हियर व्हेन x इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, तब तो ये है, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन कितना है, 3 टाइम x प्लस 1, सो फंक्शन आप यहाँ पे क्या लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम x प्लस 1, ये आपका फंक्शन है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज 1, ओके, तो जब 0 से बड़ा है x, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब उस केस में 1 की क्या मिल रही है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हेन x विल बी ग्रेटर देन 0 देन इट मस्ट बी लेस देन 1, ओके, तो आपने एज ए फंक्शन यहाँ पे 1 के लिए इसकी जगह पे इसको ट्रीट करना है, क्योंकि ये केस कब का है, ये फंक्शन की वैल्यू कब है, व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, और हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, जब x 1 की ओर को जा रहा है, तो बेटा आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर ये डेफिनेट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू आ रही है तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1, व्हाट इज द फंक्शन, 3 टाइम x प्लस 1, सो 3 टाइम 1 प्लस 1, ऑन अप्लाइंग लिमिट पुट इट हियर 1, सो दिस विल बी 3 2 6,
So this is the answer of limit x tends to 1 fx. Pause the video and take the screenshot. Okay. Now the next question. Again I have to rub the board and it is very typical to rub the board here. बहुत टफ हो रहा है. I'm sorry for the inconvenience बेटा. ये बोर्ड को रब करना बड़ा टफ हो रहा है. Okay beta, next question number 24 you will do your own. I am talking about question number 25. So question number 25 is given as evaluate limit x tends to 0 fx. Limit x tends to 0 fx, we have to find out the value of this function where fx is defined as modulus x upon x when x does not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. So see student, पहले modulus, what we know, as we know that what is modulus function, since modulus function gives plus x when x is greater than 0, minus x when x is less than 0 and 0 when x is equal to 0. This is the definition of modulus function. When x is greater than 0 तो modulus x कौन सी वैल्यू देता है, प्लस x. When x is less than 0 तो modulus x की वैल्यू होती है माइनस x and at x is equal to 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन, तब मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू होती है 0. सो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर, देन वी गेट द फंक्शन इज फर्स्ट when x is greater than 0, okay, x does not equal to 0 means there arise two cases, either x will be greater than 0 or x will be less than 0, okay. So when x is greater than 0 then modulus x, the value of mod x is equal to x and denominator में already x है, so this will cancel out, gives us 1. When x is less than 0 then modulus x gives minus x divided by x, this will cancel out, so it gives us minus 1 and 0 at x is equal to 0. So it is clear from this one that left hand limit when x is less than 0 then the function value of function is minus 1 and right hand limit when x is greater than 0 then what is the value, limiting value of the function, 1. So since left hand limit does not equal to right hand limit, so the function is, there is no limit, limiting value of the function is exist here, okay. Pause the video and take the screenshot. Next question number 26 you will do by your own, okay. Now I will discuss question number 28.
Now see student, question number 28. Function is given as fx is equal to a plus bx when x is less than 1, 4 when x is equal to 1, and b minus ax when x is greater than 1. Okay, this is the value of function at different points, not different points, but when x is less than 1, when x is greater than 1, and when x is equal to 1. And if limit x tends to 1, fx is equal to f of 1. If limit x tends to 1, f of x is equal to f of 1, then what are the possible values of a and b? So we have to find out the possible value of a and b over here. So first we will discuss about the left and right hand limit of the function at point 1. Okay, so left hand limit x tends to 1 minus f of x, because we are talking about the limiting value of the function for 1, क्योंकि 1 के लिए ही ये फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x मीन्स x is tending towards 1 from the left. Next step, limit h is tending towards 0, f of 1 minus h, because 1 के लेफ्ट में जाना है तो कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा. नाउ सी when x is less than 1, because हम 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात कर रहे हैं. सो when x is less than 1, then the value of function is a plus bx. एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी एक्स. सो एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, रिप्लेस x विद 1 माइनस एच हियर. सो वी गेट लिमिट s टाइम्स टू 0 a टाइम a plus b टाइम 1 minus h. Now apply the limit over here, so we get a plus b. This is the left hand limit. Right hand limit x is tend towards 1 plus 1 plus means x is tending towards 1 from the right hand side. Next step, limit h will tending towards 0, f of 1 plus h. अगर 1 के राइट में जाना है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा. सो x will replace with 1 plus h. So limit s tends to 0. Now see, when x is greater than 1, because we are talking about the right hand limit of the point 1. So when x is greater than 1, then the value of the function is b minus ax. So what will be the value of function, f of 1 minus h, replace x over here by 1 plus h. So we get b minus a time 1 plus h. So on applying limit, this h will be 0, we get here b minus a. Now see, it is given that limit x tends to 1, f of x is equal to f of 1. What is f of 1? F of 1 is the value of function at that point, the value of function at point 1. So when x is equal to 1, then value of function is given as 4. So we can write here left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1. So what is left hand limit? A plus b. Right hand limit b minus a equal to 4. So in first condition we will take a plus b is equal to 4. In second we take b minus a is equal to 4. Now adding both one, this will be cancelled out. 2b is equal to 8. So b is equal to 4. Now substituting the value of b in first, so a plus 4 is equal to 4, then the value of a will be 0. So a will be 0 and b will be 4. This is the required answer. Pause the video and take the screenshot. So dear student, this is all about from today's video lecture in my Google Meet doubt class, which is going to held between 1 to 2 p.m. Today. I will discuss the remaining question of this exercise. Till then, bye bye, take care, have a nice day.